Okay, friends, in this video, we are going to discuss about group theory and symmetry, group theory, symmetry. So generally, the term symmetry reflects beauty because symmetric things are beautiful. जो भी symmetric things होती है वो beautifully होती है. For example, अगर अपन if we take an example of sunflower, तो sunflower को आप किसी भी एंगल से अगर आप देखते हो, तो sunflower से आप अगर आप देखते हो तो सनफ्लावर लाइक ऐसा कुछ होता है. तो ये एकदम ब्यूटीफुल दिखता है बिकॉज इट हैज सिमेट्री. तो सिमेट्री इज सिमेट्री मीन्स सेम थिंग और इक्विवेलेंट फॉर्म. Symmetry is similar to a property of certain geometrical objects like sun, stars, flowers, human body, chemical structure, etc. अगर इन सबको अपन देखें तो एक सिमेट्री इनमें अपने को दिखाई देगी which appears the same or equivalent when mirrored or reflected along the axis. अगर उनको along the axis reflect किया जाए या mirror किया जाए, bisect किया जाए in the mirror image और mirror image से अपन if we analyze the mirror image, तो दोनों एक दूसरे की equivalent दिखती है और mirror images दिखती है. So inferring the structure whose part are in harmony of each other or equivalent to each other. For example, if we cut the sunflower into two parts, for example, this is the sunflower, and if we are bisecting this sunflower into two halves, या दो पार्ट में अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों पार्ट एक दूसरे के जैसे ही दिखेंगे. ये अगर आप ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखोगे तो दोनों एक दूसरे के जैसे ही दिखेंगे. मीन्स दीज आर इक्विवेलेंट. सिमिलरली अगर आप इन बेंजीन मॉलिक्यूल में देखते हैं तो दिस इज द बेंजीन मॉलिक्यूल. इफ वी कट और बाइसेक्ट दिस बेंजीन मॉलिक्यूल लाइक दिस फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर और दिस कार्बन टू दिस कार्बन, देन अपने को दिखेगा कि एक पार्ट ऐसा है और दूसरा पार्ट ऐसा है. सो बोथ आर द मिरर इमेज ऑफ each other. So that's why we can say it has also symmetry. In terms of science, how can we define a symmetry? If an object can take up more than one equivalent or indistinguishable orientation in 3D arrangement, it would be called symmetrical. अगर कोई ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल के पास एक से ज्यादा या मोर देन वन इक्विवेलेंट और indistinguishable orientation है in 3D arrangement, then that would be known as symmetrical. Example अगर लेते हैं अपन तो H2 का example है. So this is oxygen, this is hydrogen atom, this is hydrogen B और A और B जो अपन ने यहाँ पे लगाए हैं, these are only for understanding. So if we rotate this atom molecule through an imaginary axis like this, which is passed through oxygen atom with a certain angle like 180 degree, then we will see after rotation it looks like this. Okay, where the HB takes the position of HA and HA takes the position of HB, but it looks like equivalent. ये एक जैसा ही दिखता है अपने को. ए और बी अपन ने इसलिए लगाए बिकॉज वी अपन इनको डिस्टिंग्विश कर पाए. सो एच ए जो है वो एच बी की जगह आ जाता है, एच बी एच ए की जगह आ जाता है. और इसको अगर अपन वापस सेकंड रोटेशन दे विद द सेम एंगल 180 डिग्री, तो अपने को मिलेगा कि एच ए जो था वो वापस की ओरिजिनल फॉर्म में आ गया. ओरिजिनल फॉर्म इन द सेंस ओरिजिनल प्लेस पे आ गया है लेफ्ट हैंड साइड, because in the first structure it is in left side and in the third structure and means after second rotation it gets its actual position means left side और HB जो है वो वापस right side आ गया है. So with this way we can understand the symmetry. It means it has symmetry because after rotation it gives equivalent or indistinguishable orientation. After two rotation with 180 degree, the H2 molecule gets equivalent orientation, illustrating first and second are distinguishable, but one and third are not distinguishable. अगर अपन first and second को देखें तो distinguishable है. क्यों? क्योंकि अपन ने A and B यहाँ पे put कर दिया है. So B इधर आ गया, A इधर आ गया, तो we can say yes it is distinguishable. But if we see first and थर्ड स्ट्रक्चर तो इनमें क्या है, एच ए वापस लेफ्ट साइड है, इसमें भी एच ए वापस लेफ्ट साइड है. दैट्स व्हाई दीज आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल. So such kind of orientation are known as same orientation or identical orientation. So such kind of molecule is symmetry molecule. So after rotation must
molecule must have equivalent orientation, and after final rotation it should get identical rotations. Then and then only symmetry, we can say this molecule is symmetrical. So with this way we can understand the symmetry of the molecule. Now we have to understand the what is equivalent orientation and what is identical form or orientation. So orientation can be divided into two categories. One is equivalent and second one is identical. जैसे अभी अपन ने H2 molecule में समझा था कि first rotation of 180 degree gives equivalent form, second rotation of that molecule gives identical form. So equivalent में क्या होगा कि we these will be distinguishable, but identical में these will not be distinguishable. So first and second structure is equivalent and third and first one is identical. Similarly, if we take the example of BeCl2, BeCl2, so Cl1, Cl2. After 180 degree rotation, Cl2 comes in the place of Cl1, and Cl1 comes at the place of Cl2. But after, again, second rotation gives the equal identical form because it is not distinguishable from origin. Origin means first form. So first and second structures are equivalent, and first and third structures are identical. Similarly, in case of BF3, if we rotate this molecule with 120 degree angle with an on an imaginary axis pass through boron atom only, then after first rotation of 120 degree angle, F1 takes the position of F2, F2 takes the position of F3, and F3 takes the position of F1. So first after first rotation we have equivalent form. Why we are not saying it is identical? Because जो अपन ने 1 2 and 3 लगाए हैं, वो अपनी अपनी पोजीशन पर नहीं है. जैसे यहाँ पे F1 यहाँ पर है, तो यहाँ पे F3 है, but it is BF3 molecule. That's why it is equivalent. After second rotation of the same angle, 120 degree angle, again F2 replaces by F1, and F3 replaces by F2, and F1 is replaces by F1. So it gives again equivalent form. And after third rotation 120 degree, it gives identical. If we see the structure, the first structure, compare the structure first and structure third, so we will see that these are same, exactly same. Where F1 is existed in first, the same place at the same place F1 is existed in third structure. So that's why these are identical. So we can say the first, second, and third, these are equivalent, and first and third are identical structure. Now we have to understand the symmetry operations. की symmetry operation क्या है? Symmetry operation is the process or movement that carried out on a molecule whereby a new equivalent orientation of that molecule is obtained. जो symmetric operation क्या है कि एक process होता है, एक movement होता है, जिसके जो कि carry किया जाता है, carried out किया जाता है किसी molecule के ऊपर, और जिससे अपने को equivalent orientation of that particular molecule is obtained, उसके equivalent orientation मिलते हैं, तो वो प्रोसेस और मूवमेंट क्या कहलाता है? सिमेट्री ऑपरेशन. फॉर एग्जांपल, अगर इफ यू कंसीडर BeCl2, दिस इज द sp हाइब्रिडाइज्ड एंड लीनियर मॉलिक्यूल, तो इसके अगेंस्ट इसके ऊपर अपन एक एक्सिस के थ्रू, सपोज दिस एक्सिस इज पास थ्रू बेरिलियम एटम ओनली, and we are rotating this molecule with 180 degree, and after 180 degree rotation it gives us equivalent form, right, in this distinguishable form. So this rotation will be known as rotation is symmetry operation. रोटेशन जो है वो क्या कहलाएगा? सिमेट्री ऑपरेशन, क्योंकि रोटेशन ही एक प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से वी आर हैविंग और गेटिंग इक्विवेलेंट फॉर्म. इफ दिस मॉलिक्यूल इज रोटेटेड बाय लेस और मोर देन 180 डिग्री, अगर इसमें से अगर 180 डिग्री से रोटेट नहीं करते हैं अपन, लेस देन 180 डिग्री या मोर देन 180 डिग्री से रोटेट करते हैं, तो वी विल नॉट हैव इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, बिकॉज रोटेशन बाय 180 डिग्री सिमेट्रिक ऑपरेशन मीन्स अगर इक्विवेलेंट फॉर्म मिल रहा है अपने को, तो ही वह रोटेशन क्या कंसिडर किया जाएगा? सिमेट्रिक ऑपरेशन. कंडीशन क्या हो गई?
कंडीशन ये हो गई कि आफ्टर रोटेशन इक्विवेलेंट फॉर्म must be obtained. So symmetry operation can be carried out more than one time, but thing is that equivalent orientation must be obtained. So this is the condition कि कितने भी टाइम आप सिमेट्रिक ऑपरेशन कैरी आउट करो ऑन द मॉलिक्यूल, बट कंडीशन क्या है कि आफ्टर सिमेट्रिक ऑपरेशन आपको इक्विवेलेंट फॉर्म या ओरिएंटेशन मिलने ही चाहिए. तो यहाँ पे दो टाइप के सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन. Rotation and reflection, there are two kind of symmetric operation.